Hello and welcome. You're watching Last Tick on Money9. I'm Sakshi Batra. This is a show where we recap for you the entire market day's trading action as well as share with you an update on what kind of factors will be important to track for the next week's trading session as well. Quickly keep an eye out on what kind of closing have we seen today. So in all, if you see, it's been the fourth consecutive day of the market fall and the market slipping in red. Complete red screen in front of you. There has been no outperformance and perhaps a clear indication of a pause after the huge run-up that we've seen in the markets. Of course, in the last three trading sessions, we did see, momentarily, impacts and indications of any kind of a dip that was getting created. And there was an impending correction after the huge run-up that we had already seen, and people were talking about it. But for today, if you really see, the markets have definitely slipped in the red in a decisive move. There has been a clear indication, 1% down on the Nifty, and that has slipped below the 15,000 mark. Remember, it's come closer to 14,980 now at close. Also for the Sensex, that's given up not just 52,000 but also the 51,000 mark today, and it has slipped below that to close at 50,889. Loss of about 434 points as well as 137 points for the Nifty too. As far as the Nifty Bank is concerned, that's where the underperformance has deepened further. Over 2% of kind of a loss that we've seen. Now the Nifty Bank has slipped below the 36,000 levels. It shut shop at 35,841 levels, 745 points of a decline. At one point in time, it was down about 1,000 points as well. Although what's really happened for the technical indicators or the technical experts to really track is that markets still closed off the low point of the day as well. So we'll just have to see what kind of charts develop over the next course of week as well, and what does the pattern really suggest for that, for the covering of some of the ground from the lows of today's day as well. It could indicate that the underlying trend of the markets is still positive, even if it is a slight pause that was impending for a long time. 350 points of decline for the mid-cap index, and the small-cap index also shut shop at 153 points of a loss at 19,863 as well. All in all, it was a broad-based sell-off that we actually saw that deepened in the second half of trading session. एक बार देखते हैं कि सेक्टोरल मूवर्स में क्या इंडिकेशंस आपको मिल रहा है। यहां पर भी किसी भी इंडेक्स में आपको कहीं पॉजिटिव निशान नहीं दिख रहा होगा। इनफैक्ट इट्स ऑल फॉल डाउन इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। वी हैव क्लोज्ड द वीक with a big negative as far as the sectoral moves are concerned. The sharpest decline was seen in the PSU banking index. Remember, this is the index that has been pulling up the index in the last 2 or 3 trading sessions, and that's where all the profit booking has really come in. 4.5 to 5% of a decline in the PSU banking space. So has it been overvalued? Has it become overheated? Is this space to watch out for? We'll get you all the updates on that in our next week's coverage as well. But for now, even the private banking index, that's down about 1.5%. The realty index also slipped over 1% in trade today. Downticks coming in from the auto index, that also underperformed the markets as well today. 2.5% down for the auto index, no contribution there. 1.5% down for the financial services. The FMCG has also managed to slip in the red right in the second half. It was, up about 0.5% or about 0.20% in trade in the first half of trading session, but it has given up all those gains that it had garnered in the early morning trade. Media stocks also down about 0.86% in trade today. Metals, again, sharp decline of about 2% is being seen. Pharma not participating as well. The health has gone down by about 1.4% in today's trading session as well. एक बार देखते हैं कि आज के टॉप गेनर्स कौन से थे। जी हाँ, कुछ चुनिंदा नाम ऐसे थे निफ्टी में जिन्होंने पॉजिटिवली इंपैक्ट किया है या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी में। तो जो गिरावट है उसे रोकने में इन सभी स्टॉक्स का जरूर हाथ रहा है। आज का जो टॉप गेनिंग स्टॉक था वो यूपीएल था। अगर आप निफ्टी की बात करें 2.5% तक के अपमूव के साथ। फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज ने आज अच्छा रुझान दिखा दिया और 2.5% तक की मजबूती यहाँ दिखी है। इंडसइंड बैंक में भी 2.25% तक का अपमूव था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एफएमसीजी पैक में से काफी कंट्रीब्यूट किया है मार्केट को आज गिरने ना देने की वजह से। और गेल में अगर आप देखेंगे तो लगातार ऑयल एंड गैस स्पेस जो बज कर रहा है उसमें एक काफी टॉप पार्टिसिपेंट जो रहा है पिछले एक हफ्ते में वो गेल भी रहा है और आज भी 1.5% तक के आसपास की मजबूती यहां पर देखने को मिली है।
लैगार्ड्स में अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी में अब थोड़ा बहुत मूव डाउनवर्ड देखने को मिला है। हालांकि अगर आप इस पूरे महीने को देखेंगे 1 फरवरी से लेकर अब तक देखेंगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिव मूव हमें ओएनजीसी में देखने को मिला है। इनफैक्ट अब तक अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ओएनजीसी को स्टॉक ऑफ द मंथ भी कहा जा सकता है सो फार। और ऑलमोस्ट अगर आप ये 5% तक का आज का डिक्लाइन ले भी लें तब भी तकरीबन 19% तक के आसपास का अप मूव यहां पर दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टाटा ग्रुप से टाटा स्टील और टाटा मोटर्स ने आज परफॉर्म नहीं किया। हीरो मोटोकॉर्प ने आज 3% तक का डिक्लाइन दिखाया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जहां एक तरफ 421 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल रहे थे, अब 400 के लेवल पर अब ये स्टॉक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के जो गिरावट रही है बाजार की उसके पीछे के बड़े रीजंस क्या हैं, क्या बड़े फैक्टर्स रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत आज वीकनेस के साथ हुई क्योंकि वीक ग्लोबल क्यूज थे। भले ही आप यूएस मार्केट्स की बात करें या शुरुआती ट्रेड में अगर आप एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो लाल निशान में वो ट्रेड कर रहे थे, तो शुरुआती ट्रेड ही नेगेटिव क्यूज के साथ हुआ। प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली इतने ह्यूज रनअप के बाद आज ज्यादा हावी होती हुई नजर आई। स्पेसिफिकली कुछ पॉकेट्स में जैसे पीएसयू बैंकिंग हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, मेटल्स हो गए, इन सभी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। रियल्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब आप देखेंगे कि जो रिकॉर्ड हाई फ्यूल प्राइसेस जिसके बारे में हम लगातार आपको मनी 9 पर बता भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट से भी जान भी रहे हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है और कॉमन मैन को कब रिलीफ मिल सकता है या नहीं, इसके ऊपर काफी कवरेज हम ऑलरेडी मनी 9 पर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप money9.com पर जाकर देख भी सकते हैं। रिकॉर्ड हाई फ्यूल प्राइसेस कई शहरों में, कई स्टेट्स में 100 रुपए तक का प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है और उसी की वजह से सेंटिमेंट्स डेफिनेटली हिट हुए हैं और उसका इंपैक्ट भी आप कहीं ना कहीं आज मार्केट्स में देख पाए हैं। और जो फ्रेश कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हैं कोविड-19 के नए केसेस में, खासतौर पर अगर आप महाराष्ट्र और मुंबई की बात करेंगे तो बीएमसी ने वहां कुछ दोबारा से गाइडलाइंस इशू करी हैं ये नए बढ़ते हुए केसेस के ऊपर। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्केयर पैदा हो रहा है कि केसेस दोबारा कहीं इंडिया में जो अभी तक जो रिकवरी का फैक्टर था वो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन ना डाल दे और उसकी वजह से भी मार्केट्स में आज कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। पुअर शो फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस इज अनदर रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच वी हैव सीन द markets fall sharply in today's trading session. So that's as far as the factors of the market fall have been concerned. But apart from this, we'll keep you updated with any kind of moves that can be expected on the markets in the next week as well. You can stay tuned with us over the weekend as well, and you can see the biggest market voices that we've had so far talk about what kind of investor sentiments are being generated and how should investors really invest in such kind of market as well. So with that, we wrap up this show here, but a whole lot of coverage on personal finance is also expected right on the other side, so stay tuned with us.